Good morning, team. There are many stocks which are looking very positive. One is Cyient after the management restructuring. So we are very positive on Cyient. I think 10 to 15% upside is possible there. Vector Food is something which is very positive. The management has bought some shares from the market also, which bodes well. So Vector Food, which supplies breads and pizzas to all the KFCs or McDonald's, it is very positive looking for us. Indian Hotel, we expect a very good results from Indian Hotel and Mahindra Holiday Resorts. So hotel as an industry, we are very positive this quarter. The result season are starting in next few days. In TCS and Infosys result will come. ICICI Bank, Federal Bank, no, we are very positive. Federal Bank numbers were very good. Even IndusInd Bank numbers were very good. AU Small Finance also numbers were very good. So we are very positive. M&M Finance, again, numbers are very good. Their gross NPAs have come down, which is very positive for them. So we are positive on this stock. Government has removed tax, which was overhang, which will benefit, tax on crude is not there. And even for petrol, diesel, the tax have been removed. Diesel, it is from 1 rupee, they have cut to 50 paisa. But in other refining products, it has been removed, which is very positive for Reliance. Reliance is coming with Jio Finance also, demerger will happen. So I think Reliance is one stock to watch out for. Even ONGC will be a stock to watch out for. Surya Roshni is one more stock. And there are data which is suggesting that the IPL benefit, not TV 18 and Network 18 benefit. Jio Cinema got whopping 147 crore video views on the opening weekend, and the time spent is almost 57 minutes, which is 60% higher. And total app download is 5 crore. In the first day itself, it was 2.5 crore. So TV 18 is a stock to watch. It has corrected. So from here, 15 to 20% upside is easily possible. And Zensar Tech and even defense related stock like Cochin Shipyard, HAL and BL are something to look for. NBCC has said it has received order of 448 crores for construction of border road of 88 kilometers. RailTel also secures order, but RailTel orders are very small. Now it is two orders, one from Bihar State Electronics, which is 76 crores, and other from National Informatics Center Services. It is a Government of India enterprise where it has got a 38 crore. We are more positive on RVNL rather than this. South Indian Bank has said their advances has improved by 16.65% at 72,000 crores, and their deposit has increased marginally by 2.82%. So South Indian Bank, after the management re-rig, we are not positive. So we would avoid that. Ethos, which sells watch, has launched a multi-brand store in Indore, Phoenix Citadel Mall. It is almost 1,600 square feet. RBL Bank also came with a provisional numbers, not great. Advance was up by 16% and deposit was higher by 7%. Britannia has declared 72 rupees as dividend, and that dividend will be paid on 13th April 2023. BDL provisional sales was down by 13%. So this can have a negative reaction, but no, that will be an opportunity to buy BDL. They have said lower sales was due to electronic items. So here also chips are involved. Electronic, this chips are not in the market, and critical explosion material also they didn't get. That is why there is a delay. But order book is 7x. So we like BDL in any correction. AU Small Finance Bank, they came with a very good set of provisional numbers. These are provisional numbers.
They have said that year-on-year basis, the growth is 32% at 69,365 crores. And quarter-on-quarter basis also, growth is 14%. So advances also has grown at 26% at 59,158 crores. So this is very good because deposit is growing far greater than their advances. So this is one unique bank, and they have credit card which is 5%, 5 lakh cards. So that also. Poonawalla said their AUM has grown at 37% at 16,120 crores. We don't actively track this stock. Bandhan Bank, their advances also has grown at 9.8% at 1,09,000 crores. Their collection efficiency has improved comparatively, but we are not too positive on the stocks. But at current valuation, if market recovers, this would be something to watch out for. Fact, fertilizer company, their sales has been the highest ever in FY23. That is what the management has said in exchanges. So it is at 6,100 crores, higher by 37.8%. And fertilizer production stood at 1.7 million tons. And Craptocolum, there also the production was at 45,000 MT. I don't know whether it is metric ton or million ton. So I leave it there. NFL also recorded best ever operational performance. So the government fertilizer companies are doing very good. NFL has said they have produced 39.35 MT million ton of urea with 122% capacity utilization. This is very high. And they said that they have done almost 10 lakh million ton mark in terms of P and K, potassium and other fertilizer. This is very positive. Tejas Network wins 696 crores order, pan-India routers from BSNL. And on Monday itself, we saw the stock moving up. India has cut windfall tax on crude, ATF, petrol, while on diesel it will be reduced to 50 paisa. So it is very positive for Reliance. We have already mentioned, but again I'm mentioning Reliance, VDL, ONGC, Oil India will benefit, and oil marketing companies which are exporters will benefit. The district administration of Gurugram, Haryana has directed hospital to reserve 20% of the bed to patients from poor family. So Fortis, Max Health, Medana would have an impact. Fortis has already started doing it. Max Health and Medana would have to follow that directive, which is very negative for hospital stocks. So we need to be careful there. And I think this has started to happen in Rajasthan also. So wherever you have, the Rajasthan had a doctor strike for almost 13, 14 days, after which a deal has been signed. But it will not impact any private practice or a hospital below 50 beds. But any hospital which is having above 50 beds, then any emergency has to come with the free medication for emergency, which is very negative. Lemon Tree has signed a license agreement for 88 property in Whitefield, Bangalore. This Karnataka property is expected to be operational by October 2023. There are 6 operational hotels in Karnataka and 5 are in Bangalore. And total they have 8,400 rooms currently operational. Net direct tax collection provisional for FY23. The numbers are excellent. It is at 16.61 lakh crore. So it is higher by 17.63%. The corporate tax collection also is higher by 16.91% at 10 lakh 4,000 crores. So this is very important. The direct and indirect tax collection has been buoyant this time. So government will be borrowing less, which is very important. Devayani opens 500 Pizza Hut stores. Yeah, the 500th Pizza Hut store was opened in Connaught Place, Delhi.
Devyani as KFC and Pizza Hut in India. GAIL inaugurates state-of-art Center for Digitalization and Centralization of Payment Process. Positive for GAIL. We like GAIL as a stock, 6% dividend yield stock, and valuation is very attractive in GAIL. Indigo Paints will buy 51% stake in Apple Chemi India Private Limited for 29.33 crores. So the company is in construction chemicals and waterproofing. This will complement the business of Indigo Paint, and it will enhance their product range, and the sales also will improve. With that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. सो फर्स्ट अपडेट है सैंड के ऊपर. सैंड की जो मैनेजमेंट में है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं. तो कृष्ण बदनपुर जो है वो एमडी सीईओ थे, उनको अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एमडी किया गया है. और राजन जो सर है उनको एज ए ज्वाइन किया है सीईओ. और जो सीईओ थे उनको अपॉइंट किया है सीईओ ऑफ द साइंस. स्टॉक में हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं. तो 10 to 15% का अपसाइड पॉसिबल है स्टॉक में. इसके अलावा बेटर फूड जो स्टॉक्स है वो हम लोग को पॉजिटिव लगता है. वो बेसिकली जो कंपनी है वो सप्लाई करती है ब्रेड्स एंड पिज्जा केएफसी और मैकडॉनल्ड्स को. होटल इंडस्ट्री सेगमेंट में इंडियन होटल है, एमएचआरएल है, जो रिजल्ट सीजन नजदीक आ रहा है, तो इन दोनों के रिजल्ट्स हम लोग एक्सपेक्ट करें कि काफी अच्छे आएंगे. तो ये दो स्टॉक के ऊपर हम लोग पॉजिटिव हैं. बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजनल नंबर्स आए थे तो फेडरल बैंक के नंबर्स काफी अच्छे थे. एयू स्मॉल फाइनेंस के, मैंने फाइनेंस के जो ग्रॉस एनपीए था वो नीचे गया है, तो ये पॉजिटिव है. तो आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, आप स्टॉक को वॉच आउट कर सकते हो. देन सूर्या रोशनी जो स्टॉक है वो भी अच्छा लग रहा है. देन गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिडक्स किया है क्रूड ऑयल पे वो पॉजिटिव है ओवरऑल. रिलायंस के लिए, ईडीएल के लिए, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया है, ये बेनिफिशियरी रहेगी. तो ये स्टॉक को आप एक बार वॉच आउट कर सकते हो. देन इसके अलावा जो जेंसर टेक है वो स्टॉक अच्छा लगता है. डिफेंस सेगमेंट में एचएएल है, बीएल है, कोचिन शिपयार्ड है, ये स्टॉक हम लोग को अच्छे लगते हैं. देन नेक्स्ट अपडेट है एनबीसीसी के ऊपर. एनबीसीसी जो है उन्होंने सिक्योर किया है कंस्ट्रक्शन ऑर्डर 448 करोड़ का. देन नेक्स्ट अपडेट है रेलटेल कॉर्पोरेशन है. कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 76.10 करोड़ का. इसके अलावा कंपनी को और एक ऑर्डर मिला है 38.95 करोड़ का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज से. ओवरऑल हम लोग ये सेगमेंट में आरबीएनएल के ऊपर पॉजिटिव है. देन नेक्स्ट अपडेट है जो साउथ इंडियन बैंक्स है उसके ऊपर उनके जो नंबर्स थे प्रोविजनल नंबर्स, उसके ऊपर अपडेट है कि कंपनी के जो एडवांसेस है वो 72,000 करोड़ रिपोर्ट किए. डिपॉजिट 2.82% से इंक्रीज हुआ है. बट मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस होने के बाद हम लोग ये स्टॉक को इतने पॉजिटिव नहीं है, तो ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए. देन इटॉस जो ब्रिस्ट वॉच की जो कंपनी है वो मल्टी ब्रांड स्टोर फिनिक्स मॉल में ओपन कर रहे हैं. द नेक्स्ट अपडेट है ब्रिटानिया के ऊपर. कंपनी के बोर्ड है उन्होंने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड 72 रुपीज पर शेयर फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए. एयू स्मॉल फाइनेंस जो है उनके जो नंबर्स आए थे उसमें जो ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर वो 32% है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो 14% की ग्रोथ है. एडवांसेस 26% से हायर आए हैं 59,158 करोड़. नंबर्स काफी अच्छे हैं. उनके क्रेडिट कार्ड है वो भी 5 लाख के अराउंड है, तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं. देन बंधन बैंक है, उसके ऊपर भी जो नंबर्स थे प्रोविजनल उसके ऊपर अपडेट है. बंधन बैंक जो है उन्होंने 9.8% का ईयर ऑन ईयर राइज देखा गया एडवांसेस में क्वार्टर 4 में, और वो 1.09 लाख करोड़ है. और डिपॉजिट है वो 12.2% से हायर आया है 1.08 लाख करोड़ के. बट हम लोग ये इतने पॉजिटिव नहीं है बंधन बैंक के ऊपर. देन पैक्ट जो कंपनी है फर्टिलाइजर वाली, उन्होंने एक्सचेंज पे रिपोर्ट किया है कि उनका जो सेल्स है वो अभी तक का हाईएस्ट एवर है फाइनेंशियल ईयर 23 का. देन फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन है वो कुछ 1.7 मिलियन टन के अराउंड कुछ है. तो गवर्नमेंट फर्टिलाइजर कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. तेजस नेटवर्क है, उनको एक ऑर्डर मिला है पैन इंडिया राउटर्स जो बीएसएनएल से, और वो ऑर्डर की जो वर्थ है वो 696 करोड़ की है.
देन हम लोगों ने पहले भी अपडेट किया है कि जो गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स रिड्यूस मतलब किया है, जो डीजल है उसमें 1 रुपीज पर लीटर पहले था, वो अभी 50 पैसा कर दिया है। तो ओवरऑल ये जो पॉजिटिव रहेगा ओएमसी जो कंपनी है उसके लिए। नेक्स्ट अपडेट है लेमन ट्री के ऊपर। लेमन ट्री ने एक होटल है वो साइन अप किया है लाइसेंस बेंगलोर में, उसमें 88 न्यू रूम की जो प्रॉपर्टी रहेगी और ये ऑपरेशनल होगा अक्टूबर 2023 से। और ओवरऑल लेमन ट्री के 6 ऑपरेशनल होटल है कर्नाटका में, उसमें से 5 है बेंगलोर में। देन नेक्स्ट अपडेट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो डेटा आया था उसमें। तो फाइनेंशियल ईयर 23 का 66.61 लाख करोड़ के अराउंड नंबर्स आए थे। कॉर्पोरेट टैक्स वो 16.91% से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वो काफी नंबर्स अच्छा है, तो गवर्नमेंट अभी जो बोरो करेगा वो काफी लेस होगा, तो ये पॉजिटिव है। द नेक्स्ट अपडेट है देवयानी के ऊपर। देवयानी जो कंपनी है वो पिज्जा के 500 स्टोर्स दिल्ली में कुछ ओपन करने का प्लान कर रही है। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडिगो पेंट्स के ऊपर। कंपनी एक्वायर करेंगी 51% स्टेक कंस्ट्रक्शन जो केमिकल है एप्पल केमी वो कंपनी में। देन गेल के ऊपर हम लोग काफी पॉजिटिव है। 6% कंपनी डिविडेंड यील्ड देते हैं, तो वैल्यूएशन वाइज भी देखे तो स्टॉक काफी अच्छा है, तो ये स्टॉक को एक बार आप वॉच आउट कर सकते हो। देन जीएसडब्ल्यू स्टील है, वो जो कंपनी है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनको जो जैसलपुर है माइन कर्नाटका में, उसका जो ऑर्डर बिड किया था वो ऑर्डर उनको मिल गया है और उनके जो रिजर्व है ओनली 32 मिलियन टन से दो। देन मारुति सुजुकी के ऊपर अपडेट था, कंपनी ने बोला है कि वो इंक्रीज करेंगे प्राइजेस जो मॉडल रेंज है अप्रैल से। पार्शियली इम्पैक्ट इस पे ओवरऑल इन्फ्लेशन और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से है, पर ओवरऑल जो इंक्लूडिंग होंडा कार, टाटा मोटर्स, हीरो मोटर को वो भी उन्होंने भी प्राइस हाइक का ऑलरेडी अनाउंस किया था अप्रैल से। इतना मेजर इम्पैक्ट इसमें कुछ होगा नहीं। देन नेक्स्ट अपडेट है टीवीएस मोटर के लिए। कंपनी एक्वायर कर रही है 25% स्टेक जर्मन बेस्ड जो ई मोबिलिटी फर्म है किलवाट कैश कंसिडरेशन से, और ये जो अक्वायर करेंगे 25% तो 2 मिलियन यूरो से, और ये ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड है कि वो कंप्लीट होगा अप्रैल 24 तक। नेक्स्ट अपडेट है एचडीएफसी बैंक के ऊपर। बैंक के एडवांसेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16,500 बिलियन के अराउंड है मार्च 31 के जो डेटा है उसमें। जो ग्रोथ है अराउंड 16.9% है ईयर ऑन ईयर, और जो बैंक के डिपॉजिट है उसकी जो ग्रोथ है अराउंड 20.8 ईयर ऑन ईयर। कासा भी ग्रो हुआ है 12.5% से ईयर ऑन ईयर। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडसइंड बैंक के भी नंबर्स काफी अच्छे आए थे। जो डिपॉजिट ग्रो हुआ है 14.6% ईयर ऑन ईयर, 3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और कासा रेशियो अभी है डाउनटिक उसमें विटनेस हम लोगों ने देखा है 270 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर और 190 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट एडवांसेस ग्रो हुआ है 21.3% और 6.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देन बजाज फाइनेंस के भी नंबर्स आए थे। जो उनका कोर एयूएम है वो ग्रो हुआ है 29% से, और न्यू लोन बुक जो है वो ड्यूरिंग क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23 वो भी ग्रो हुआ है 20% से 7.6 मिलियन। और कंपनी ने हाईएस्ट एवर न्यू लोन्स अभी रिपोर्ट की है 29.6 मिलियन फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे आए थे। फेडरल बैंक के भी नंबर्स प्रोविजनल नंबर्स आए थे, उसमें 5.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कासा रेशियो में भी डाउनटिक विटनेस हुई है 26 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर और 157 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओवरऑल ग्रॉस एडवांसेस ग्रो हुआ है 20.2% से और 3.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। देन नेक्स्ट अपडेट है महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर के जो नंबर्स आए थे। तो उनका ओवरऑल डिसबर्समेंट है मार्च 23 का वो अराउंड 5,600 करोड़ का है, 42% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी अराउंड मार्च क्वार्टर में अच्छी आई 105% के अराउंड। देन लास्ट अपडेट है एचडीएफसी लिमिटेड के है, उसके ऊपर एचडीएफसी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिविजुअल लोन्स है वो अमाउंटिंग है अराउंड 9,340 करोड़ का क्वार्टर 4 के लिए, और जो कंपेयर करेंगे हम लोग सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से तो वो 8,367 करोड़ था। और उनका जो इंडिविजुअल लोन है वो 12 मंथ्स में जो सोल्ड हुआ है वो अराउंड 36,910 करोड़ है। ग्रॉस इनकम कंपनी ने जो डिविडेंड क्वार्टर डिक्लेयर किया है वो 207 करोड़ के अराउंड है। और नो मतलब कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी में उसमें कोई भी सेल नहीं है। Technical and derivatives outlook. So on Monday's session, we saw that Nifty inched up
till 17,428, but then it was a more of a lackluster trading session, being a holiday ahead. So we believe that Nifty has to close above 17,500 levels. So then we'll see a fresh momentum on the higher side. Having said this, the lower side, 17,200 is the immediate support, which was a gap up on the Friday session. So I believe the 17,200 to 17,500 will be the trading range for the next 1 or 2 trading session. Whenever we see a very strong closing above 17,500, we believe Nifty will be heading for 18,000, 18,200 on the higher side. So bias is positive. Any declines in the Nifty close to 17,300 within this range, 17,300 to 17,200 should be viewed as a buying opportunity. As we believe in the month of April, we will be seeing a higher side breakout, and we are having a positive bias. Coming to Bank Nifty has closed at 40,813, and Bank Nifty has already crossed the Friday session high. So Bank Nifty was one of the outperformer, and it looks very strong positive on charts. So the immediate resistance for the Bank Nifty is at 41,000. So above 41,000, Bank Nifty has potential to rally towards 43,000, 43,500. ICICI Bank and Axis Bank is something which is very strong on charts. So I think both the counters can be viewed from a trading point of view. So, and if you see this like Monday session, only the AU Bank was one counters which was not so contributing to the overall banking, but rest all other stocks were in positive. So we maintain both the indices positive bias, and we are looking for a near-term breakout in the charts. Coming to derivatives data, so there was a short covering in Nifty futures to the tune of minus 7.8%, which was decreased in OI by minus 10.28 lakhs. The put call ratio actually declined from 1.27 to 1.15 ratio, a slightly corrective. Then the major additions were seen in 17,500 and 17,700 call options. So for the immediate basis, this will act as a resistance. Lower side 17,000, there was a major put writing, so that will act as a support. The Bank Nifty, we saw a short covering to the tune of minus 29.7%, which was a decline of 14.96 lakh shares. Even the put call ratio has declined from 1.29 to 1.23, so slightly corrective in the Bank Nifty. The major additions were seen in the 41,000 and 41,200 call option. So that will act as a resistance. Support was seen at 40,500 put option. So that should be the support for the Bank Nifty. Net, we are having a positive bias. We are looking for a trading with near-term breakout on the charts. The two counters which we will keep a watch is ICICI Bank and Asian Paints. Asian Paints, it looks like there can be some reversal on the charts. Currently, the Asian Paints are 2787. In and short-term view till 3,000 is what we are looking at on the cards. So maybe during for the April month, that can be the probable upside for the Asian Paints. So net, the bias is positive. We would recommend buy on decline kind of strategy for the day. So that's all from mine. I'll hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Hi, good morning all. So first of all, update on Scient. So Scient had conducted a call day before yesterday, and they have announced few leadership changes. So Krishna Bodapur, who was MD and CEO of Scient, is now Executive Chairman and MD. And similarly, there have been changes in COO, CFO level, etc. So net, we need to see how this new team goes ahead and execute. Then on JSW Steel, so JSW Steel has won a iron ore mine in Karnataka. But the results are only 32 million tons, so not a major positive, but marginally positive because Karnataka region there has been shortage of iron ore. Then on Maruti, so Maruti has announced that they will increase some of the prices in April for the products because of the overall inflation and regulatory requirements. So, but the company has not announced the quantum of price hikes. Some of the other competitors have already announced price hikes. So this is not a major positive. It is like pass through for raw material impact and all the other costs that are escalating.
Then on TVS Motors, the TVS Motors has now agreed to acquire 25% stake in German-based e-mobility from Kilowatt for cash consideration. So this is like slightly positive for the company. Then there were quite a few announcements from the NBFCs and banks on advances and deposits. So overall, it's been very positive. Most of them have reported strong growth. HDFC Bank, for example, reported a growth of 17% in a bank's advances, so that is positive. IndusInd Bank reported 15% YOY growth. But Bajaj Finance reported very strong numbers. Core AUM grew by 29%, so that is very positive. Even Federal Bank reported a growth of 17%. But Mahindra Finance, again, another NBFC doing very well, which reported a 42% YOY growth in AUM. So that is decent. And even HDFC Limited reported decent growth in AUM and now stands at 9,340 crores. And HDFC Bank is slated to merge with HDFC Bank in quarter or so. So overall, this might be termed as positive.